सिविल सर्विसेज एकेडमी जैसी डी देवघर के सौजन्य से मैं शशिकांत तिवारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त आप सभी अभ्यर्थियों का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रत्येक दिन की भांति 7:30 बजे से 8 बजे का ये जो विशेष प्रसारण हमारा होता है प्रीलिम्स परीक्षा, चाहे वो यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा अथवा स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स परीक्षा, तो उसमें सफलता के निमित्त ये प्रसारण अभ्यास एमसीक्यूज के माध्यम से ऐसे प्रश्नों पर जो या तो पीवाईक्यू है अथवा वर्तमान में करंट अफेयर्स के साथ साथ वे काफी महत्वपूर्ण है। विकास प्रजापति, वेरी गुड इवनिंग। आप उपस्थित हो चुके हैं और धीरे धीरे हमारे सभी अभ्यर्थी अब उपस्थित होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, आज सोमवार है और सोमवार के दिन हम लोग हिस्ट्री करते हैं। सो हिस्ट्री में काफी प्रश्न आते हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन भी कभी कभी। ओके, सो 15 इज द मिनिमम डियर एस्पिरेंट्स। और इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक कालीन भारत यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इन सभी से प्रश्न आते ही आते हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, मोहम्मद आलम, वेरी गुड इवनिंग। आप भी उपस्थित हो गए, तो आइए चलें। द ईयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ विमेन्स इंडियन एसोसिएशन, WIA। बहुत ही आसान सवाल से आपको मैं ले चलता हूं। तो द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ विमेन्स इंडियन एसोसिएशन WIA is A 1947, B 1937, C 1927 and D 1917। So dear aspirants, ये जो विमेन्स इंडियन एसोसिएशन की बात है इस प्रश्न में, तो आपने बताना है कि किसने इसकी स्थापना की और उसका साल क्या था। तो ये दोनों बातें, सो द डी इज द आंसर, 1917। डियर एस्पिरेंट्स, अडयार मद्रास में एक जगह है और वहीं पर मल्टी एथनिक ग्रुप ऑफ वेमेन इस्टेब्लिश्ड द वेमेन्स इंडियन एसोसिएशन। सो इन 1917, 1917 में इसकी स्थापना हुई। द WIA वाज one of the first organizations to boldly connect Indian women's social and sexual subjugation with patriarchy, poverty, and political disenfranchisement. The WIA was one of the first organizations to boldly connect Indian women's social and sexual subjugation with patriarchy, poverty, and political disfranchisement. So, dear aspirants, this is the brief explanation to this MCQ. Now, let us move to the next question. By the Act of 1858, 1858 का जो अधिनियम था, उसके द्वारा इंडिया वाज टू बी गवर्नड अंडर होम, भारत पे शासन होना था किसका? ओके, भारत शासित होना था किसके अधीन? दिस इज द क्वेश्चन। ए, बाय द कंपनी, ये तो आंसर होगा नहीं। बी, इन द नेम ऑफ द क्राउन। सी, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड डी, इन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Now, dear aspirants, you have to find out the correct answer. B is the correct answer, Mr. Vikas Prajapati, in the name of the crown. Wonderful. So, the Government of India Act. So, this act is known as the Government of India Act 1858 was an act of the Parliament of United Kingdom passed on August 2nd, 1858. Its provisions called for the liquidation of East India, British East India Company, who had up to this point been ruling, dear aspirants, British India under the auspices of Parliament. And
the transference of its functions to the British Crown. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1858 के पहले जो भी एक्ट आए, इसके पहले भारत में प्राचीन काल में, मध्यकालीन में एक्ट की तो कोई बात ही नहीं थी। सो द फर्स्ट एक्ट वाज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1757 में वॉर बैटल ऑफ पलासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, और उसके बाद 1773, और उसी के द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कलकत्ता में। डियर एस्पिरेंट्स, 1 चीफ जस्टिस एंड 2 जस्टिसेस। तो ये है। और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, देन आफ्टर 4 चार्टर एक्ट्स, 4 चार्टर एक्ट्स। डियर एस्पिरेंट्स, 1793 फर्स्ट charter act, and after gap of 20 years, that is 1813, 1833 and 1853, these are the 4 charter acts, dear aspirants. And now after 1857, the first war of independence, I should say, okay, but most of the historians, they tell it as mutiny, सिपाही विद्रोह। okay, सिपाही विद्रोह। so after that 1857, okay, after 1857 this act 1858 government of India act came into being, dear aspirants. And then after you will find that Canning proclaimed the victory of British arms. Parliament passed the Government of India Act transferring British power over India from the East India Company, whose ineptitude was primarily blamed for the mutiny, okay, to the crown. So, dear aspirants, Vikas, your answer is correct. Now, please concentrate on this very question. The Gadar party was founded in San Francisco, USA, by whom? This is the question. A. Madam Bhikhaji Kama. B. Lala Hardayal. C. Shyamji Krishna Verma. And D. Both A and B above. So what should be the answer, dear aspirants? इसका उत्तर क्या होगा, ये आपने बताना है। मिस्टर परशुराम कुमार जी, आपको बहुत बहुत शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग। और थोड़ी बहुत देर हुई, दो प्रश्न निकल चुका है, ये तीसरा प्रश्न है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द डे, dear aspirants. So in 1913, you should write it. In 1913, 1913, Pacific Coast Hindustan Association was founded by Lala Hardayal with Sohan Singh Bhakna. Okay, Bhakna, Bhakna. Now the answer is B, and B is the correct answer. B is the correct answer. लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। The first issue of Gadar was published from San Francisco on November 1st, 1913, also known as the Gadar Conspiracy, was a plan to initiate a pan-India mutiny in British Indian Army in February 1915 to end the British Raj in India. Dear aspirants, let us have this question. The Pune Pact 1932. The Pune Pact 1932 was an agreement between. Now you have to find out the correct answer out of these 4 options, dear aspirants. A. Nehru and Ambedkar. B. Gandhi and Ambedkar. C. Malviya and Ambedkar. And D. Gandhi and Nehru. Dear aspirants, you have to investigate, you have to examine whether, okay, out of these 4 options, which option is correct. So, dear aspirants, the answer to this MCQ is B, Gandhi and Ambedkar. So, the Pune Pact 1932 was an agreement between Gandhi
and Ambedkar. Dear aspirants, an agreement between Dr. Baba Saheb Ambedkar and Mahatma Gandhi was signed 84 years ago on September 24, 1932. The agreement was signed by Pandit Madan Mohan Malviya and Dr. Ambedkar and some Dalit leaders at Yarwada Central Jail in Pune to break Mahatma Gandhi's fast unto death, आमरण अनशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं. डियर एस्पिरेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपने इस प्रश्न में क्या देखा? पूना पैक्ट 1932 में हुआ और ये महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच हुआ. डियर एस्पिरेंट्स, तो ये भी, और कहां हुआ, स्थान की यदि बात है उस पे प्रश्न आता है तो ये हुआ यरवदा सेंट्रल जेल इन पुणे. Now let us have this question. Which of the following national leaders did not defend soldiers of the Indian National Army in 1945 case dealing with trial? For your better understanding, I am going to repeat this question, dear aspirants. Which of the following national leaders did not defend soldiers of the Indian National Army in 1945 case dealing with trial? A. Sir Tej Bahadur Sapru. B. Bhula Bhai Desai. C. Rajgopalachari. And D. Jawaharlal Nehru. So, dear aspirants, the national leader Rajgopalachari did not defend soldiers of the Indian National Army in 1945 case dealing with trial. So, C is the correct answer, Mr. Parasuram ji. Rajgopalachari. So, C is the correct answer. National leader Rajgopalachari did not defend soldiers of the Indian National Army in 1945 case dealing with trial. So, dear, Vikas is telling B, but the answer is C. Vikas. So, Rajgopalachari, and you should note it down. Now, let us move further. Here comes a question. Which of the following treaties brought an end to the independent existence of Peshwa Bajirao II? बाजीराव टू ये मराठा पेशवा हैं और उनके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व पर पूर्ण विराम लगा दिया, यानी समाप्ति हो गई. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज, you have to find out the name of the treaty, okay, which brought an end to the independence existence of Peshwa Bajirao II. Dear aspirants, A. The Treaty of Purandar. B. Convention of Vadgaon. C. Treaty of Basin. And D. Treaty of Salbai. ये सारी की सारी जो संधियां हैं काफी महत्वपूर्ण है. डियर एस्पिरेंट्स, जब आप इतिहास की बात करते हैं तो उसमें युद्ध है, लड़ाइयां हैं, तो संधियां भी हैं. तो उन दोनों को आपको स्मरण करना होगा. लड़ाइयों की सूची, संधियों की सूची. परशुराम बता रहे हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, बट द आंसर इज ट्रीटी ऑफ बेसिन. बेसिन की संधि इसका उत्तर होगा. सी इज द आंसर. बाजीराव टू वाज द लास्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर. बाजीराव द्वितीय ये मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे. डियर एस्पिरेंट्स, who governed from 1795 to 1818. 1795 to 1818, 24 years of tenure. He was installed as a puppet ruler by Maratha nobles whose growing power prompted him to flee his capital and sign the Treaty of Basin, okay, 1802 with the British. तो 1802 में जब ही ये बेसिन की संधि हुई तो उसके बाद जो सब कुछ स्वतंत्र जो अस्तित्व था पेशवा का वो अब समाप्त हो गया. डियर एस्पिरेंट्स, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज, कौन इनमें से संधि है which brought
an end to the independent existence of Peshwa Bajirao II? Dear aspirants, the correct answer is Treaty of Basin. You may have the spelling of this place Basein. So now let us move further. देखिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे और यहां पर हमारे पास एक और प्रश्न आ गया है और ये प्रश्न है डियर एस्पिरेंट्स जो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर हम देखेंगे यस, हु स्टार्टेड, हु किसने शुरू किया द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज पेपर इन इंडिया? ए बाल गंगाधर तिलक, बी राजा राम मोहन रॉय, सी जे ए हिके HICKEY, and D Lord William Bentinck. So the first English newspaper started in India by whom? This is the question, and I have already narrated the 4 options, dear aspirants. Now you have to find out the correct answer. So the correct answer is C, Bengal Gazette. This was the name, Bengal Gazette, GAZETTE, was the first English newspaper started by J.A. Hickey. So C is the answer, Mr. Parsuramji. JAHICKEY, Hickey, in 1780. So the time 1780, the person J.A. Hickey, the name of the newspaper Bengal Gazette, dear aspirants, country India. So Hickey's Bengal Gazette was the first English language newspaper published on the Indian subcontinent. It was founded in Kolkata, capital of British India, at that time by Irishman James Augustus Hickey. So he was an Irish man in 1779. In front page news stories were written in English, British English, elsewhere in the paper. However, Anglo-Indian expressions were used freely and without translation. So, dear aspirants, now let us have next question. And here we have the first women to become a chief minister of any state in India was. तो वो कौन थी पहली महिला मुख्यमंत्री? ए नंदिनी सतपथी, बी डॉक्टर जे जयललिता, सी सुचेता कृपलानी, and D Mrs. Mayawati. So you have to find out the correct answer. Okay, the first women to become a chief minister of any state in India. Okay, so C was C. C was C. No, Akash Misra, your answer is not correct. Mr. Alam and Parsuram are correct. So where from, Mr. Misra, you are joining me? कहां से आप ज्वाइन कर रहे हैं? सर, I am 5 minutes late because writing question. Yes, you should write. You should write. Sucheta Kripalani is the correct answer. So she was an Indian freedom fighter and politician. She was India's first women chief minister, serving as head of Uttar Pradesh government from 1963 to 1967. GKP गोरखपुर. ओके, वेरी नाइस मिस्टर मिश्रा. और आप IAS की तैयारी कर रहे हैं अथवा स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बिकॉज सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विस से बड़ी सेवा कोई नहीं है इस देश में, खासकर हमारे भारत में, डियर एस्पिरेंट्स. और मैं तो मानता हूं इट्स नॉट ए जॉब, इट्स ए परफॉर्मेंस. आपको परफॉर्म करना है. तो आइए चले अगला ये प्रश्न लेते हैं. हाउ टू कनेक्ट यू सर, वांटेड टू टॉक टू यू सर विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट. ओ माय गॉड, yes, I am just writing my personal contact number. Actually that is my WhatsApp number, 9934
7391 and 91. So this is my personal contact number as well as WhatsApp number, Mr. Misra. You may contact me, okay, and you may join my group. Okay, there you will find so many reading material, study material, preparation material. This class is evening session. Okay, evening session every day at 7:30, only for half an hour. So 7:30 to 8 p.m. Dear aspirants, Monday history. Okay, we take up history on Monday. So all subjects, and on Saturday, CSAT. CSAT. Sunday is the day of current affairs and some mix up most important events related to our nation, or related to international platform. Okay, Mr. Misra, thank you very much. So here comes the next question. Okay, and you all know the answer, I'm sure. Okay, who is the author of Bande Mataram? A. Mahatma Gandhi, B. Rabindranath Tagore, C. Bankim Chandra Chatterjee, and D. Sharath Chandra Chatterjee. So, what should be the answer? Okay, if you are knowing the writer of Bande Mataram, the author of Bande Mataram, dear aspirants, Mr. Alam is correct. Mr. Bankim Chandra Chatterjee. So, who is regarded as the father of modern India? आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? ओके, आधुनिक, यस मिस्टर मिश्रा, करेक्ट, वेल डन. सो आधुनिक भारत का पिता, who is regarded as father of modern India? Now options: A. Raja Ram Mohan Rai, B. Swami Dayanand Saraswati, C. Sri Aurobindo, and D. Bhagat Singh. Okay, so the answer to this MCQ is A, correct. And here is thumbs up for your correct answer, Mr. Misra and Mr. Alam, Muhammad Alam. So Raja Ram Mohan Rai is known as the father of modern India in acknowledgement. Why do we say him father of our nation? Not our nation, but modern India. Yes, father of our nation is the father of our nation, Akash Misra here. Yes, yes. It is flashing. Okay, I will answer your call. Yes, just after the conclusion of this class. Just now you gave me number of, yes, yes, and your number is 171. The last three digits. Okay, so let us see. Raja Ram Mohan Rai is known as the father of modern India in acknowledgement of his age-making social, instructive, and political changes. So this is the correct answer. Now, the most important feature of Government of India Act of 1919 was. Now let us see. Okay, I have already narrated the East India Company periods acts. Okay, now let us see, after the crown being the authority, dear aspirants, the first act was GOI, Government of India Act 1858, and then after Council Act, and then after Government of India Act 1919 1935. Dear aspirants, so there were three Government of India Acts: 1858, 1999, and 1935. The last act was India's Independence Act 1947. So, dear aspirants, the most important feature of Government of India Act of 1919 was A. Enlargement of Indian councils, B. Provision for direct election, C. Diarchy in the provinces, and D. All of the above. मतलब पूरा का पूरा, dear aspirants, A, B, C. So enlargement of Indian councils, provision for direct election, and diarchy in provinces. So the answer should be D. The answer should be D. इसका आंसर D होना चाहिए, क्योंकि the most important feature of the Government of India Act of 1919 was enlargement of Indian councils,
provisions for direct election and diarchy in the provinces. So our answer should be D. Well, Mr. Misra, once again you have answered correctly. So dear aspirants, Muslim communalism, what is the meaning of communalism? सांप्रदायवाद, ओके, सांप्रदायिकता, ओके, कम्युनल। और ये काफी दिनों से 1905 के पहले कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और ये भारतीयों को अच्छा नहीं लगा। यद्यपि कि कारण बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव, जो काफी बोझ था प्रशासन पे ये करना, बट इसका डिजाइन, इसका निर्णय निश्चित रूप से भारत के बंटवारे तक ले गया। 1905 ने जो लहर पैदा की वो 1947 में भारत के टुकड़े करके, और दोनों बाजू वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, आज ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश है और आप सभी देख रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग देयर। आई शुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स जस्ट नाउ। वे निश्चित रूप से मेंस एग्जामिनेशन में यू मे फाइंड सम क्वेश्चन, ओके, लेकिन हाँ भी नहीं भी, क्योंकि वो थोड़ा डिप्लोमेसी के बिंदु पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, बिकॉज बहुत सारा कुछ वहां पे हो चुका है। मुस्लिम कम्युनलिज्म वाज लेंट ऑन इम्पेटस बाय द एक्टिविटीज ऑफ, ये किसकी एक्टिविटी थी? ए अशफाकुल्ला, बी लियाकत हुसैन, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड डी सैयद अहमद खान। सो डियर एस्पिरेंट्स, यहां पे आपको बताना है कि मुस्लिम कम्युनलिज्म वाज लेंट एन इम्पेटस by the activities of, okay, I shall wait for a while for your answer. If you are not going to answer, then here is the answer. The answer is D, okay, Sayyid Ahmad Khan. So Sayyid Ahmad Khan, okay, the Muslim communalism was lent an impetus by the activities of Sayyid Ahmad Khan. Mr. K. Prasad is telling good evening sir ji. Yes Mr. Kailash, very 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 good evening, बहुत बहुत आपका गुड इवनिंग। और ये जो व्हाट्सएप है मिस्टर मिश्रा, उसी वो मेरा मोबाइल है, बट आफ्टर क्लास, ओके, आई विल रेस्पॉन्ड, डेफिनेटली रेस्पॉन्ड यू। नाउ हियर, who threw 2 bombs on the door of the Central Assembly in New Delhi on April 8, 1929? सो सेंट्रल असेंबली के दरवाजे पर 1929 में 2 बॉम्ब किसने फेंक दिया? ए भगत सिंह, बी बटुकेश्वर दत्त, सी राजगुरु एंड डी ए एंड बी अबव, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर। सो व्हाट शुड बी द आंसर? इफ यू आर नोइंग, प्लीज राइट इट इन chat box. Dear aspirants, Bhagat Singh also disapproved that the two should be escorted after the bombing by the rest of the party. On 8 April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb onto the corridors of the assembly and shouted Inqilab Jindabad. So Parsuram ji, your answer is correct. So here is a thumbs up. So dear aspirants, long live the revolution. This was followed by a shower of leaflets stating that it takes a loud voice to make the deaf, okay, hear. Now dear aspirants, अब इस प्रकार से ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आपके संज्ञान में इस प्रश्न को मैंने डाला। सो अब एक प्रश्न करके और इसे हम आज समाप्त करेंगे। द प्राइम कॉज, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन with 15 questions today, dear aspirants. So the prime cause of the 1857 mutiny did not include. ये 4 जो ऑप्शन हम बोलेंगे उसमें से कोई एक 1857 की सिपाही विद्रोह अथवा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण नहीं था। द प्राइम कॉज, ओके, प्राइम कॉज, प्राथमिक कारण
of the 1857 mutiny Sipahi Bidroh did not include A. The new system of education, B. The Widow Remarriage Act, C. The dispatch of Indian sepoy to Afghanistan, and D. Laws forbidding intermarriages between Indians and the British. So, नो मिस्टर परशुराम मिश्रा जी, ये इसका कारण नहीं था। ओके, सो 1857 की क्रांति में, यस मिस्टर आलम, डी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। लॉज फॉरबिडिंग इंटर मैरिजेज बिटवीन इंडियंस एंड द ब्रिटिश, दिस वाज नॉट द प्राइम कॉज ऑफ, okay, 1857 mutiny or the first war of independence. So dear aspirants, it's time to take leave, and आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामना। Okay, and tomorrow at the same time, that is 7:30, I shall be online, so join me tomorrow. And tomorrow will be, I think, geography or polity. Okay, geography, or let me verify what is okay, कल का सब्जेक्ट क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू गुरु जी, जय मां सरस्वती। हाँ मिस्टर आलम, बट व्हाट इज द सब्जेक्ट टुमारो, आर यू एबल टू स्पीक अबाउट दैट? आप बताएं कि कल का सब्जेक्ट क्या होगा। यस, सो आई हैव गॉट दैट। So tomorrow's subject is geography. On Wednesday, okay. Monday is polity. Oh my God, Monday is polity. So tomorrow will be polity, and Wednesday geography, Thursday economy, environment on Friday, science and tech Friday, CSAT Saturday, and current Sunday. Okay, okay. So Monday is history. So tomorrow will be polity and IR as well, international relation. So many thanks for joining me today, dear aspirant. Let me say good night to all of you. Bye bye.